No, a lot of fake. No, but we like them. It just shows you, when you can get every story, 100% of the stories, no matter what you do that's good, they make it as bad as possible, and then you win in a landslide. There's something wrong. But the fake news hit me with eggs. Remember, first week, 4 days, eggs are through the roof. I said, I just got here. What's going on with eggs? Tell me. I didn't hear about it. They're up 5 times higher than they should be. They were going through the roof, but they were blaming me. I said, I just got here. And within 2 months, our great Secretary of Agriculture, who I think is with us tonight, Brooke, where's Brooke? Oh, look at you. Look, she is here. She flew all the way she comes from Texas, but I think she likes Iowa maybe even better. Look at her. You did a good job with groceries and with eggs. We'll tell you, it's true. They said, we have them this time, finally. It took an egg to get me, but that didn't happen either. Now they're down to a normal price, and people are ordering like crazy, but inflation is dead. 401ks and retirement accounts just hit an all-time record high. Did I hear what I think I heard? But we've achieved the lowest level of illegal border crossings in U.S. history, 0 illegals. Think of it, we had 0. And as I said, and I'll say it again, I love it because I have never seen any country suffer. No country has ever. There's never, don't worry, it's only fireworks, I hope. Famous last words. My famous last words. Trump said, don't worry, it's only fireworks. And yeah, you always have to think positive. I didn't like that sound either. You know? But last month, American-born workers gained 830,000 new jobs, a record. That's American-born. While the illegal aliens lost 340,000. And we don't want bad for them, but look, we have a country to run, and we want to have them come in, and we want to have them help our farmers. You know, you probably saw I got myself into a little trouble because I said, I don't want to take people away from the farmers. And we're going to do something I think that's going to be good because we want all the criminals out. Everybody agrees that we're finding the criminals, the murderers, the drug dealers. We're getting them the hell out of here. But the farmers, some of the farmers, many of you sitting right here, I have 4 friends right in the 5th row. But some of the farmers, you know, they've had people working for them for years. And we're going to do something. We're working with Christie. And we're going to do something that we're going to sort of put the farmers in charge. And if a farmer's been with one of these people that work so hard, they bend over all day. We don't have too many people can do that. But they work very hard, and they know them very well. And some of the farmers are literally, you know, they cry when they see this happen. If a farmer is willing to vouch for these people, in some way, Christy, I think we're going to have to just say that's going to be good, right? You know, we're going to be good with it, because we don't want to do it where we take all of the workers off the farms. We want the farms to do great, like they're doing right now. So, Christy Noem has done a fantastic job, and Tom Homan. And we're working on legislation right now. Susie, right? We're working on legislation right now where farmers, look, they know better. They work with them for years. You had cases where, not here, but just even over the years, where people have worked on a farm for 14, 15 years, and they get thrown out pretty viciously, and we can't do it. We got to work with the farmers and people that have hotels and leisure properties too. We're going to work with them, and we're going to work very strong and smart, and we're going to put you in charge. We're going to make you responsible, and I think that that's going to make a lot of people happy. Now, serious radical right people, who I also happen to like a lot, they may not be quite as happy, but they'll understand, won't they? Do you think so? Madam Secretary, look at you with a white hat on. Do you think they'll understand that? You're the one that brought this whole situation up. Brooke Rollins brought it up, and she said, so we have a little problem. The farmers are losing a lot of people. And we figured it out, and we have some great stuff being written, and let the farmers be responsible. And then if the farmers don't do a good job, we'll throw them the hell out of the country. We'll let the illegals stay, and we'll throw the farmer the hell out, okay? Get ready, farmer, I'm telling you. But okay, so the fake news will write that. Donald Trump will throw farmers out of our country. They will write it. Because whenever I'm sarcastic, you know, when you can't be sarcastic as a politician. Well, if you're me, you can't be if you're
So I want to say I was only kidding. No, the fake news will write it. Donald Trump wants all farmers thrown the hell out of our country. The audience booed the hell out of him. There was no boo. No, they're fake news. That's why nobody watches them anymore. Violent crime is plummeting, and we're on track to reach the lowest murder rate ever recorded by the end of this year. It looks like we're doing way good. And that's knowing that we have a lot of people in the country that we didn't have in the country 4 or 5 years ago. I mean, we have a lot of people that they allowed into the country that are serious criminals. A lot of them are on their way out, however. Iran's nuclear enrichment has been obliterated. Remember when CNN said, it wasn't obliterated. It was maybe damaged or damaged badly, but obliterated is too strong a word. No, it was obliterated. That's now been proven. The Atomic Energy Commissions, everything that's been obliterated. And they were trying to demean me by saying that, but they were really demeaning those great pilots and people and mechanics that got those planes over there and were able to shoot from high up in the air going very, very fast with potentially a lot of things being shot at them and hit every single one, They're trying to demean me, but to me they were demeaning them. And they got out of the plane and they said, what the hell? We hit every single target. They know better than anybody. But now that's been proven. It's CNN fake news and scammers that work for them. Scam writers that work for them. But we understand it and we fight it back. And a lot of people said, sir, don't criticize it because they're beneath you. No, they're not beneath me. Nobody's beneath. You got to put it. Otherwise, people don't understand. If you don't say something about it, you got to say it. These people did one of the greatest military hits and maneuvers in the history of our country, and I want them to be appreciated for it. So they're coming to the White House tomorrow night, and I'm signing the bill with the Speaker of the House. And by the way, Mike Johnson did a great job. John Thune did a great job. Everybody. This whole 2 weeks has been incredible, hasn't it? You know, when you think of all of the victories, we stopped 5 nations from going to war, and somebody else will get the Nobel Peace Prize for their writing about Donald Trump. A professor at some school that you've never heard of has received the Nobel Prize for his writing about Donald Trump and what Donald Trump did. I'll say, what about me? I don't get it, but that's one of those things. But think of it, we stopped India and Pakistan. We stopped Kosovo and Serbia. They've been fighting for a long time. And a lot of it was trade. I said, you're not going to trade with us if you're going to go to war. And India, Pakistan was big, very big for a different reason. I mean, they have little things called nuclear weapons. You would have had pretty soon a nuclear war. We stopped that. In Africa, you look at what was going on in the Congo with Rwanda. That war was going on for 30 years. 30 years, and we stopped it, and it was vicious. 6 million people killed, and it was a bad one. It was killed and killed badly. Machetes. A machete. You know what a machete is? You don't want to know. And we just did a really great job. And then, of course, you cap it off with the perfect hit in Iran, where they were talking awfully badly. You know, death to America, death to Israel. They were talking awfully badly, and they're not talking badly anymore, to be honest with you. And we might even meet with them and see if they want to meet. They want to meet, and we'll see if we can do something. But they want to meet. I think they want to meet very badly. But our allies have agreed to pay over $1 trillion a year for our defense. You saw what happened in NATO. In fact, we have our ambassador to NATO here. Where's our You know that guy? In Iowa, they know him. Big Matt Whitaker. We have Matt Whitaker from Iowa. I wasn't going to hire him, and then I said, Matt, you come from Iowa, don't you? Yes, sir, I do. Okay, you're hired. Anybody comes from Iowa, I hire. And every branch of the U.S. military is setting records for new enlistments. You know, remember a year ago, it was embarrassing. They couldn't get anybody to go into the military. They couldn't get anybody to go into the police or fire departments. They couldn't get anybody to go into government. And now we just set a record, a new record of enlistments in every single branch of the military and in all police forces. 1 year.
1 year ago, I remember saying to our great First Lady, I said, you know, First Lady, I call her First Lady because it makes me feel good. First Lady, isn't it terrible? You're saying good night, First Lady, my darling. Because it reminds me that I'm president. That's why. Now, I said, First Lady, it's terrible. Nobody wants to join our military force. And you know, that was very demeaning to the people that are in there, that have been in there for a long time doing a good job. And then all of a sudden, like, we get elected and there's a spirit in the country and we start doing well. We have victory after victory in so many different things, especially economically. We're doing so good. We have hundreds of billions of dollars flowing in from other countries. We have plants being built all over. I mean, a little less here because you have enough with your farm. Oh, by the way, but I did get beef and I got ethanol into Europe. You saw that. You saw that. United Kingdom, they didn't want to do it. You know, they never took our beef and they never took our ethanol, and we said, got to do it, and they did, and they were great. We made a wonderful trade deal with them, but we're doing that all over. Is ethanol very important still for Iowa? Is it so? Yes? Anyway, so they're taking it in the United Kingdom, and beef, they never took it because they want to do their own. You know, they have a lot of farms and a lot of farmers, and they want to do their own, but they took it. And it's going to be great. You're going to do, I'll tell you what, the farmers here are going to do incredibly. Plus, we have tariffs on a lot of this stuff that was coming in and absolutely killing you, where they have different forms of vegetation coming in at prices that were very, very bad for you. And a lot of it comes in because they want to put you out of business, and then they want to raise the prices. And we're not letting that happen to the farmers and to Iowa, to Nebraska and Wisconsin and all these other places that have been so great. And in breaking news just yesterday, we reached a historic trade agreement with Vietnam to open their markets to American exports with zero tariffs. They get zero tariffs. And you're going to be giving them vast amounts of farm product, including beef, pork, poultry, dairy, and pure Iowa ethanol. You're going to be given all of those products. And the fact is, I could go on, but the fact is really strong, and it's stronger than it's ever been and stronger than I've ever seen. The golden age of America is upon us. This is a golden age. This is such a beautiful term, the golden age. And I couldn't have even said it in my first term. I'm telling you, this is going to blow the first term away, and we did great. We got great marks in the first term. And this is going to blow it away. This incredible national resurgence is happening just in time for one of the biggest events in the history of our country. Exactly 1 year from tomorrow, we will celebrate the 250th anniversary of America's founding with a birthday party, the likes of which you have never seen before. 2 years ago, I came to Iowa and promised that the festivities would begin right here at the Iowa State Fairgrounds, and to tonight, here I am, okay? Promise is kept. Promise is kept. It's an honor, too. It's an honor because you've been with me from the beginning. Thank you. Thank you very much. No, it is an honor. You've been with me from the beginning. It was without doubt. In fact, I had some moments when I said maybe they might not, fake stories were put out there like, I don't like corn. I don't like corn. I love corn. But they give you fake news. I said, you think that's going to hurt me in Iowa? My numbers went up. No, I don't know. I can't figure you people out. This evening, we're officially launching America 250, an enormous year-long nationwide celebration of our heritage. It's really also a celebration of our flag, our great American flag, and our glorious American freedom. Did anybody see the beautiful flag I put up in front of the White House? Right? Everyone's liking it. Everyone's liking it. I actually put two up. I put one in the front and one in the back. I didn't want to go too crazy. I thought that would be enough. They're big. They're about as big as you can get. We're proud of it. We will be announcing many more details in the weeks to come, but there are just some of the things that we have planned. And I have to say, first, in honor of the wonderful tradition of fairgrounds like this one. This is a great fairground. As you know, I've been here before.
we will be orchestrating what we're calling the Great American State Fair, and it will start right here in Iowa. Right? So we're starting it off in Iowa. Now we're starting it off at your great fairgrounds, and we're going to have a big crowd, just like we do tonight. That's a big crowd. I can't even see the end of it. So thank you back there. I'd like to move the press back so they could see better. But the Great American State Fair will bring America 250 programming to fairgrounds across the country, culminating in a giant patriotic festival next summer on the National Mall, featuring exhibits from all 50 states, and all 50 states are excited, and I was excited. You know, when I did the 250, there was nothing I could do. It was 250, it was 250, so I can't say that was my baby. The country happened to be 250 years old, but what I did do is during my first term, I got the Olympics and I got the great soccer, you know, that whole deal, right? We call it soccer, they call it football. I got them both. I got the Olympics. First I got the Olympics and I got it. I was president and I said, you know, it's a shame. It's a shame. I got the World Cup and I have the Olympics. And I did it, and you have no idea. President Obama didn't want to make a call to the Olympics. You know why? Because he went to Switzerland or wherever, and he said, you know, if a president goes to get the Olympics, you have to have a deal. You have to be chosen. He went there and he came in fourth, so he hated them, I guess. And he was unwilling to make a call, and they called me up. Democrats called me up, actually, from Los Angeles, and I said, I'll do it. I made the call, and I couldn't get the people off the phone because they were so starved for love. Because nobody would call him from. Anyway, we made a deal. I got the Olympics. Then we got the World Cup with Johnny. We got the World Cup, and I got them both. And I looked at my people. I said, isn't it a shame? I got these two, but it wasn't in the next 4 years. It was right after that and the one after that. And I got the Olympics. I got the World Cup, and we also have 250. So it's a pretty wild term. But I got these two things that are incredible. Nobody else could have done it. I'm telling you, everybody wanted it. Nobody could have done it. And I said, and I won't be president because I'll be president for 4 more years, but it won't be. And then they cheated and rigged the election. They rigged. You know, they don't even turn off the cameras when I say that now because now they know it's true, too. But they knew it was true before. Remember, the cameras used to immediately turn off. You see all those beautiful red lights go off. Now I can say whatever I want because then they know it's true. But they knew it was true before. It's fake news. That's why they call it. But you know what? This term is much more consequential than if I had done it the more traditional way. This was slightly harder, believe me. It's slightly more dangerous because there are criminals on the other side that tried to put your president in jail and went after him, just like they do in third world countries. And we all beat them together. We beat them because our level of popularity was so high. And it was high because I explained the situation. When these thugs came around, I explained it to the people. And fortunately, I was able to be on a lot of television, I did whatever you had to do. I had to explain it. Then they said, wow, that's fake stuff. It was fake. They're a bunch of bad people, but we kicked their ass and we're going to continue to do well. And I appreciate it. And there was nobody more loyal than Mr. Kaufman, who's fantastic, and Iowa, and his son, who's maybe more fan. Where the hell is he? Stand up. Where's your boy? His son is better than him, I'm telling you. And he doesn't mind. I have a lot of fathers who would be very insulted if I said that, but they're bad people. He's a good guy. He's got... देखिए एक दिन जियो के साथ इतवार शब 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। जर्म को हटाए और दे हमें ऑलराउंडर प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, हिफाजत का ऑलराउंडर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास का मौजू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तक़बिल के लिए नया ECO विजन है। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। तो जिस तरह उन्होंने, मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। ये जो जंगबंदी है इसके पीछे वर्दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी का सहरा वज़ीर-ए-आज़म के साथ फील्ड मार्शल के सर बांध दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान इसराइल सीज़ फायर में वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। जिस तरह इन्होंने आलमी रहनुमाओं को कायल किया, बातचीत की और सारा मामला अंजाम को पहुँचा, इसमें हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। मोहसिन नकवी ने उलमा किराम से मुलाकात में मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करने की भी अपील की। रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। अफगान वजारत ख़ारजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक बताया। रूस ने काबुल में सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अफगानिस्तान की वजारत ख़ारजा ने कहा कि इस कदम से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक दूसरे को गालियाँ देने की नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये हुकूमत आइन की धज्जियाँ बिखेर रही है। पाकिस्तान की तारीख आइन की बहाली और तोड़ने में गुजर गई। हर जगह करप्शन हो रही है, हर इदारा करप्ट है, हर इदारे में माल चल रहा है। मौजूदा हालात में चुप बैठना मुजरिमाना गफलत होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने वाले 26 अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस में हंगामा आराई के सबूत, अरकान पंजाब असम्बली के नाम और हल्कों की तफसीलात भी शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन तोड़ने वाले 35 भी होंगे तो यही करेंगे। जो कुछ उन्होंने किया इसके नतायज भुगतेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक है कि अदम एतमाद लेकर आएं। कहा, PTI के डायलॉग हम पहले भी सुनते थे। जब अदम एतमाद कामयाब हुई वो सबके सामने था। अगर PTI के पास वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में ज्यादा अरकान हैं तो वो अदम एतमाद ले आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं। ऐसा हर बार नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। ANP के सदर एमल वली खान की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की मुखालफत।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी की इतनी हैसियत नहीं कि हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि फैसल करीम कुंडी तो कौंसलर की सीट तक नहीं जीत सकते। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुर्रो ने कहा कि गवर्नर जितना मर्जी कोशिश कर लें KP हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका किरदार खैबर पख्तूनख्वा में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों के मेंबरान की तादाद 53 हो गई। 34 आज़ाद अरकान अपोजिशन इत्तेहाद को सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 20 अरकान दरकार हैं। हुकूमत साजी के लिए 73 अरकान की सादा अक्सरियत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 रुकनी ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 115 जनरल, 26 खवातीन और 4 अक़लियतों के लिए नशिस्तें मुख्तस हैं। तहरीक इंसाफ कानून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनहारिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि 26वें आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इनहराफ किया। 26वें आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा है 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। के लोग सारे के सारे मेरे गम में, मेरे दर्द में शरीक थे, लेकिन जिस तरह एक बेचारा बाप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता था, अपने बच्चों की तरफ देखता रहूं, लेकिन मैं देख नहीं सकता था क्योंकि मेरे बच्चे इस हालत में खड़े थे। में गाड़ी आई है और जब गाड़ी के पास में बाकर गया हूँ तो उन्होंने एक ही रास्ता निकाल दिए। इनसे मैंने पूछे, हाँ भाई अभी क्या करने? उन्होंने कहा कि इस रास्ते के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो गाड़ी चली गई है। तकरीबन आधा घंटे के बाद एक और गाड़ी आई है, बड़ी गाड़ी थी। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं लेकर आए। तो मैंने बोला फिर किस लिए आए हो? फिर आप लोग भी आओ। जिस तरह मैं बेदर्दी से रो रहा हूँ, बेदर्दी से देख रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी तरह देखो ना। 12 बजे तक मैं अपने बच्चों को पानी में तड़पता हुआ देख रहा था, लेकिन कोई बंदा मेरी मदद के लिए नहीं आए। सियालकोट वाली फैमिली 2-2 1-1 2-2 1-1 करके 10 के 10 बंदे बह गए। बेबस, लाचार, मजबूर बाप दरियाए स्वात ने अपने बच्चों को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। नजरों के सामने जिगर के टुकड़े, बीच में बिफरा दरिया। बेकस नसीर अहमद रेस्क्यू वालों से मदद की मिन्नतें करता रहा, लेकिन खाली हाथ आए इमदादी कारकुन कुछ न कर सके। न कश्ती, न लाइफ जैकेट, मदद के नाम पर सिर्फ एक रस्सा, वो भी छोड़कर चले गए। पानी में फंसे बच्चे, बूढ़े, खवातीन डूब कर उभरते, उभर कर फिर डूब जाते। 1.5 से 2 घंटे में सब एक एक करके बेरहम मौजों की नजर हो गए। बाप की आंखें पथरा गईं, उम्मीद, आस, जिंदगी सब डूब गई। सानहा स्वात से कबल हिफाजती पुश्तों की मजबूती की वजह से दरिया का रुख मोड़ा गया। कमिश्नर मलाकंड की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। दावा किया कि मुतासरा सयाह 9:31 पर दरिया में गए। 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी। रेस्क्यू एहलकार 20 मिनट बाद 10:05 पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ और सूबाई चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह की हेलीकॉप्टर में स्वात आमद। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बहुत बातें की गईं कि स्वात में लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया। वो जिस हेलीकॉप्टर में सवार आए हैं वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं, छोटा हेलीकॉप्टर है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि दरिया स्वात में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाने का इंतजाम कर लिया गया था, लेकिन इससे पहले सानहा रोनुमा हो चुका था।
दरियाए स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी रहा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 रोज कबल दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था, 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान से और 1 का ताल्लुक स्वात से था। छह से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी और तूफान का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस शहरी इलाकों में मुमकिना तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर, दीर, स्वात, चित्राल और कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा, जोब, ज़ियारत और कलात समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में शदीद बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्टा, बदीन, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, लड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक कराची में आज से 5 जुलाई के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत का आशूरा पर 5 और 6 जुलाई को सरकारी तातीलात का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। जुलूस की गुजरगाह पर दुकानें और मार्केटें सील, कंटेनर रखकर सड़कें बंद कर दी गईं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी सफीर ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क देखने का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा, कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियाँ शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाना ज़रूरी है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मईशत की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से 12 करोड़, जबकि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजिरों की तादाद 9,20,000 तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को भी 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान से रूस के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। वस्त एशियाई ममालिक और रूस तक पाकिस्तान से ज़मीनी राबते बढ़ाने के लिए रेल रोड नेटवर्क पर इत्तफाक। खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान शाहराहों की तामीर में तेज़ी लाई जाए। अलीम खान ने बताया कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन और शाहराहों पर CCTV मॉनिटरिंग अमल में लाई जा रही है। मोटरवेज को बैरियर फ्री करने और टैगिंग लाजमी करार देने पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। रूसी वज़ीर ने कहा कि दोनों मुल्क खित्ते में तजारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। माहिर अमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी ने कहा है कि अस्पताल से बाहर किसी को दिल का दौरा पड़े तो सिर्फ 7% लोग बच पाते हैं, लेकिन अगर 3 से 5 मिनट के अंदर मरीज को AEDs से झटके दे दिए जाएं तो 50 से 70% तक जानें बचाई जा सकती हैं। प्रोग्राम बादशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी ने कहा, नौजवानों की अचानक मौत की वजह हमेशा शरियाने बंद होना नहीं होती, 25% वजूहात मौरूसी भी होती हैं। खिलाड़ियों की अचानक अमवात भी अमूमन दीगर वजूहात से होती हैं। जवानों में दिल की बीमारी बढ़ने का कोई साइंसी सबूत नहीं, ना ही इन अमवात का ताल्लुक कोरोना वैक्सीन से है। लाहौर
के इलाके जौहर टाउन में शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। CCTV वीडियो में शेर को फार्म हाउस की दीवार फलांग कर गली में खातून पर हमला करते देखा जा सकता है। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि शहरियों पर हमले के बाद मुलजिम शेर को लेकर रूपोश हो गया। टीमें शेर बरामदगी और मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। FIR के लिए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। पोल्ट्री के सनती जोन का फजले मिले पानी का KB फीडर में अखराज का इंकशाफ। KB फीडर का पानी केंजर झील में शामिल होने के बाद कराची को सप्लाई किया जाता है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध की टीम के मुताबिक फैक्ट्रियों के फिल्टर प्लांट गैर फाल मिले। फजला मिले पानी को ट्रीटमेंट के बगैर नहर में छोड़ा जाता था। ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 रुपए के नए डिज़ाइन का कोई नया नोट जारी नहीं किया। जियो फैक्ट चेक ने असिस्टेंट स्टेट बैंक से तस्दीक कर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल 1000 के नए नोटों की तमाम तस्वीर जाली हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथियों की जानिब से खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता हमले का पर्दा चाक कर दिया। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने शनाख्त जाहिर न करने पर खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। 2 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गईं। स्टन ग्रेनेड्स और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल भी किया गया। ये इक़दाम किसी वाज़े खतरे के बगैर किए गए। वीडियोज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स को इसराइली टैंकों के जरिए ताकत का मुजाहिरा करने की बात करते सुना गया। गजा में इसराइली मजालिम से अमरीका समेत दीगर ममालिक के 48 नंबर और बड़े तजारती इदारे माशी फ़ायदा उठाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ की गजा नस्ल कशी पर इसराइल को आलमी तजारती इदारों की मुआवनत पर मबनी रिपोर्ट। AI टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, असलहे और IT सेक्टर्स के इदारे गजा में इसराइली नस्ल कशी से तजारती फ़ायदा उठाने वालों में शामिल। कब्जे की मैशत से नस्ल कशी की मैशत नामी रिपोर्ट में फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का इसराइल के साथ तिजारत, माली ताल्लुकात ख़त्म करने और असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का जिक्र। आयोवा में अमरीका के कौमी दिन की तकरीर से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग न रोकी जाती तो जौहरी तसादुम हो सकता था। ईरान की जौहरी तनसीबात को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत तरीन फौज और बेहतरीन आलात हैं। दुनिया ने देखा अमरीकी तैयारों ने 37 घंटे बगैर रुके सफ़र किया। अमरीकी सदर ने कहा बाइडन दौर में लाखों जराइम पेशा अफराद अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। वो बिल के जरिए सरहद से गैर कानूनी दाखिले को मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डेपुटेशन प्लान शुरू कर दिया है। सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी मंजूर कर लिया। बिल के हक में 218 और मुखालिफत में 214 वोट पड़े। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप बिल पर आज दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की बिल मंजूरी पर कांग्रेस को मुबारकबाद कहा। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए मईशत तेजी से तरक्की करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि वो यूक्रेन जंग का मुज़ाकरात के जरिए खात्मा चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन में अपने मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों सदूर के दरमियान मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया।
न्यूयॉर्क की मेयरशिप की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दाम से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वो इसका मुकाबला करेंगे। जोहरान ममदानी ने कहा कि सदर ट्रंप उन्हें गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हकूक़ की बात करूँ, उन लोगों की बात करूँ जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था जिससे अब वो मुनहरिफ हो रहे हैं, इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार में कहा कि अगर जोहरान ममदानी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को उनके फ़राइज़ की अंजामदही से रोका तो इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार करेगी। बरतानिया में माशी बदहाली शिद्दत इख्तियार करने लगी। सैकड़ों बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स बंद। एक नंबर कंपनी ने भी आइंदा बरस अपने 33 आउटलेट्स मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। चेक रिपब्लिक की खातून को पैमा क्लारा नंगा पर्वत की चोटी सर करने के दौरान गिरकर हलाक। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने भी नंगा पर्वत पर चेक को पैमा की हलाकत की तस्दीक कर दी। नायब सदर अल्पाइन क्लब के मुताबिक हादसा कल सुबह 4 बजे के लगभग कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान पेश आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दियामर का कहना है कि खातून को पैमा की लाश ढूंढने के लिए आज ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का अवलीन मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद इंतकाल कर गए। उन्होंने 1954 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा कि रेसलर दीन मोहम्मद की मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। अगले माह भारत में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने पाकिस्तान टीम को क्लियरेंस दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खेल का कहना है कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाक भारत मुकाबलों के खिलाफ नहीं, बैनुल अक़वामी मुकाबलों का तकाजा है कि हम उन मैचेस से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से नहीं रोकेंगे। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर बिहार में खेला जाएगा। और पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के प्लेट कप डिवीजन के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान विमेंस ने सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मालदीव या चाइनीज ताइपे से होगा। हेलो, मीट माय ऑलराउंडर फैमिली। इनको लगा घर पे है तो सेफ है। ले आए सेफगार्ड जो स्किन, बदबू और बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स को हटाए और दे हमें ऑलराउंडर प्रोटेक्शन। सेफगार्ड, हिफाजत का ऑलराउंडर। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे आयोवा अमेरिका, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 250वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। They find the body about 5 blocks away. That does not sound promising to me. They said, no, it's getting better. I said, that's okay. Let somebody else use it. But we're not going to have all electric. We're going to have electric if people want it. Electric is great, but gasoline people like better in many cases. But you can have whatever you want, but it's ridiculous to mandate that everybody's going to be driving an electric car in 5 years from now. So I ended it. I signed an order to begin eliminating the Federal Department of Education and send education back to the states. That means Iowa's going to run their own education. You're going to have to run your own education. Iowa, well, I use you in my thoughts. Whenever I say Iowa and Indiana, and I'd mention certain states, but you want to run your own education because you don't want the bureaucrats in Washington doing it. And I made English the official language of our country. You would think that would be an easy one. It was not as easy as you think. I directed the reinstatement of all patriots expelled from our military by the Biden vaccine mandate, returning them to their former rank with full back pay. And I signed executive orders to abolish critical race theory and transgender insanity from our schools and from our military.
And I made it official policy of the United States that there are only two genders, male and female. And if it's okay with Iowa, we are keeping men out of women's sports. Is that okay? I also renamed the Gulf of Mexico. I renamed it to the Gulf of America. And we're restoring the name of the greatest president, one of the truly great presidents, somebody that made our country very rich, William McKinley, to Mount McKinley in Alaska. So in conclusion, in everything we do, we're once again defending the values, traditions, and beliefs that made every generation before us so very proud to be American. You know that better than anybody in Iowa. And here in Iowa and across this land, we believe that America is an exceptional nation, blessed by God. It's really destined to be the freest, strongest, the greatest country ever to exist on the face of the earth. And we're going to make it that way much more so than it's ever been. We believe in the wisdom of our founders who declared that our rights do not come from bureaucrats in Washington. Our rights come from our Creator in heaven. That's where our rights come from. And we reject government discrimination and so-called diversity, equity, and inclusion mandates. They're just about washed out the window, actually. They're just about over with. We're just about finished. In this country, we believe in hard work and we believe in merit. And by the way, we're allowed to have merit. We're now back to being a merit-based system. We had a decision in the United States Supreme Court. Our country is now a country based on merit. We oppose censorship, price controls, open borders, and sex changes for children. We support our troops, respect our police, and salute the heroes of ICE and Border Patrol. We cherish our Constitution, and we defend free speech, free assembly, religious liberty, and the right to keep and bear arms, our Second Amendment. We take our pride in our heritage, and we want it in a beautiful heritage that we have, and we teach our children to love our country, honor our history, and always respect our great American flag. You have to respect our flag. From Philadelphia to Phoenix, from Gettysburg to the Golden Gate Bridge, and from factories of Detroit to the fairgrounds of Des Moines, we stand on the shoulders of heroes and legends who crossed the oceans, blazed the trails, tamed the wilderness, settled the continent, raised up those beautiful skyscrapers, and stood tall and defiant in the face of tyranny and death. From 1776 all the way through today, American patriots have won triumph after triumph. We've had victory after victory, and let nothing stand in the way of the USA, which we love so much. It was hardworking citizens like you who won our independence, secured our liberty, and built this country with courage, grit, and skill. And starting right here in Iowa, it's such a great place, and I hope you love it, but it's such a great place. You should love it. You should love it. You know, sometimes you take things for granted. This is one of the really great places, but I've been all over. It was hardworking citizens like you who saved our country in November 2024. Think of that, November 25th. Who would have thought there'd be this much of a change this fast? I didn't even think it would happen this fast. Happened at a level that nobody even thought possible. Again, we have the hottest country anywhere in the world. Today, with your help, America is free, America is proud, and America is sovereign once more. And this 4th of July, our magnificent destiny is closer than ever before. We are one people, one family, and one united American nation. We will never give in. We will never give up. We will never back down. And we will never, ever, ever surrender. We will fight, fight, fight. We will win, 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 because we are Americans and our hearts bleed red, white, and blue. And together, as we look forward to the 250th
year of American independence, we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Iowa. Thank you. Thank you very much. Thank you, Iowa. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के शहर आयोवा में 250वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद को अपने लिए नोबेल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार समझता हूं। कहा कि 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका, एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। उन्होंने ये भी कहा कि कांगो रवांडा जंग बंदी उन्होंने कराई। अब एक ऐसे स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम दे दिया जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। आयोवा में अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को सफाहस्ती से बचा दिया। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत तरीन फौज और बेहतरीन हालात हैं। दुनिया ने देखा कि अमेरिकी तैयारों ने 37 घंटे बगैर रुके सफर किया। अमेरिकी सदर ने सरहद से गैर कानूनी दाखिला मुकम्मल बंद करने का ऐलान किया। कहा कि अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्लान शुरू कर दिया है। और इस तकरीर के आखिर में उन्होंने नारा लगाया, वी विल मेक अमेरिका पावरफुल अगेन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान के शहर शोशा कराबाग पहुंच गए। फजूली हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफत आदिल करमली, आज़रबाईजान के पाकिस्तान में सफीर खिज़र फरहादोफ, पाकिस्तान के आज़रबाईजान में सफीर कासिम मोहिउद्दीन और आला सफारती और हुकूमती एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ़द में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में खनकंदी में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत की। वो इस इजलास में शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे। तवक्को है कि सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। और पाकिस्तान में नाजरीन देख सकेंगे प्रोग्राम स्कोर और जियो इंटरनेशनल के नाजरीन के लिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद जो माजी में अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी का अब भी हिस्सा हैं। उन्होंने 47 खिलाड़ियों को स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर मदऊ किया। 3 मरहलों में इन खिलाड़ियों की तरबियत की गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के हवाले से बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज को लेकर अब भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि हल तलब हैं। टीम में सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत, नए खिलाड़ियों की आमद के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब भी बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। आज के इस प्रोग्राम में इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। सीधा आपको लेकर चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर अहमद शहजाद। खुशामदीद कहेंगे आपको। और अहमद, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं, हमको अभी पाकिस्तान की उस टीम के ऐलान का इंतजार है जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जाएगी। और इस टीम में खासतौर पर फास्ट बॉलर को लेकर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। हमने जिन फास्ट बॉलर के साथ होम सीरीज
सीरीज में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। उसमें टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैं, ऑलराउंडर हसन अली हैं, फिर उसके साथ अब्बास आफरीदी हैं और फहीम अशरफ। सवाल यहाँ पर यह उभर रहा है कि मुस्तकबिल में हमने एशिया कप और आईसीसी वर्ल्ड T20 एशियन कंडीशन में खेलना है, क्या पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए ये रिसोर्सेस काफी है या आपको लगता है कि नहीं, इस फास्ट बॉलिंग में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, अभी बेहतरी की गुंजाइश तो ऑब्वियसली मौजूद है। तो आपकी टीम जो 9वें नंबर पे आ गई है ना, ठीक है, एक फॉर्मेट में आप 8वें नंबर पे हैं, एक फॉर्मेट में आप 9वें नंबर पे हैं, फॉर्मेट में आप 7वें, तो गैर बेहतरी की गुंजाइश के तो ये सारी चीजें नहीं हुई। और मोर और लेस आप देखें कि बहुत सारा जो बड़े प्लेयर्स है पाकिस्तान के, वो सारे बैटिंग के अंदर भी मौजूद रहे हैं, वो बॉलिंग के अंदर भी मौजूद रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं होते। ठीक है, तो जहां तक आप बेहतरी की बात चाह रहे हैं, बिल्कुल बेहतरी की तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स आए, लेकिन मसला यही था कि पाकिस्तान ने पास्ट के अंदर किसी को मौका नहीं दिया, डेवलप नहीं किए, तो जिसकी वजह से आज जो है पाकिस्तान के पास जो है फास्ट बॉलर्स की थोड़ी सी कमी नजर आती है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं हारिस रऊफ की, आई थिंक ऑन एंड ऑफ हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है। एट टाइम्स वो एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ उन्होंने बाकियों से जरूर बेहतर बॉलिंग की है। हसन अली ने भी रिसेंट पास के अंदर पीएसएल जो गुजरा है या काउंटी उनके जो स्टिंट्स है वहां से वापस आए हैं तो बकदरे फिट लग रहे हैं। अब आप टीम के अंदर उनको लेके आए तो आपने कैरी तो नहीं करना, तो आपने मौके तो देने हैं ना, खिलाना है, ताकि पता लगे कि इंटरनेशनल रेडी है कि नहीं है। और जहां तक अब्बास अफरीदी की आप बात कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी ने परफॉर्मेंस की है, बड़े बड़े नामों से बेहतर परफॉर्मेंस की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिसेंट में पाए हो गए थे। तो आई थिंक ये जो फिर नसीम शाह की फॉर्म डामाडोल है, तो आपके जो बड़े बड़े नाम थे उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं करके दिए हैं, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान 9वें नंबर की टीम है। और अब नए लड़कों को मौके देने का मौका है, ताकि हमें पता लगे कि कौन से ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वजह फरमाया अहमद शहजाद आपने कि नए लड़कों को मौका देंगे तो कल ये नए लड़के तजुर्बे के साथ टीम पाकिस्तान का बोझ अपने कंधों पर उठा पाएंगे। लेकिन जरूरी है कि हम माजी की गलतियों से सीखें। पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ चंद खिलाड़ियों के गिर्द अपने आप को रखा, लग रहा है कि ये मामला जो है, ये जमूद जो है वो टूटने को है। अगर हम टेस्ट कैप्टन बाबर आजम और टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, जो क़यादत के मनसब पर मौजूद रहे, अब नहीं है, तो सवाल यह है कि वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बाहर हुए हैं। लेकिन इसमें सूरत हाल में तीसरा नाम T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को 5 मैचों में क़यादत के फराइज अंजाम देने वाले शाहीन शाह आफरीदी हैं, जिनकी अभी इस टीम में जगह बनती दिखाई देती है। लेकिन ऑफ द फील्ड कुछ ऐसी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि उनका केस रिजवान और बाबर के मुकाबले में मजबूत तो है, लेकिन फौरी उनकी टीम में वापसी दिखाई दे नहीं रही। आप पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत करीब से जानते हैं और जब से आप बतौर तज्जियाकार टीवी पर जलवा अफरोज हुए हैं तो अंदर की बात भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जी बिल्कुल, आउट ऑफ द फील्ड भी उनकी चीजें रही हैं। फिर होता ही है कि जब आपकी आउट ऑफ द फील्ड भी चीजें चल रही हों और स्क्रूटनी होने लग जाए फिर चारों तरफ से। एक टाइम था जब ये टीम खेल रही थी तो सारा पाकिस्तान और इन्फ्लुएंसर्स कुछ सीनियर्स को बाहर निकालना था, तो इनकी गलतियों पे भी पर्दा डालते रहे और उनको बैक